यू वोंट बिलीव जो गेस्ट हमारे आज हैं वो इंडो कैनेडियन आर्म रेसलर है एंड शी इज जस्ट 14 एंड 14 इयर्स की एज में वो एशियन चैंपियन है एंड वर्ल्ड में सिल्वर मेडलिस्ट है. सो एंजॉय द पॉडकास्ट. उनके बारे में थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें की हैं एंड उन्होंने कुछ बड़ी इंडियन आर्म रेसलर्स को चैलेंज भी किया. सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. ऑल्सो मैं उनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो डू फॉलो हर. व्हाट ब्रॉट यू इनटू आर्म रेसलिंग? अब कैसे स्टार्ट किया आपने एंड क्या जर्नी क्या थी? तो मैं जब से बहुत यंग थी, आई लव द आइडिया ऑफ आर्म रेसलिंग क्योंकि मैं हमेशा बचपन से बहुत स्ट्रांग थी. सो मैं मेरे डैड और मेरे फ्रेंड्स के साथ आर्म रेसल करती थी और मैं मेरे लाइक इवन द गाइज हु वर ट्वाइस माय एज व्हेन आई वाज वेरी यंग मैं उनको भी आर्म रेसलिंग में गिराती थी. लेकिन आई नेवर न्यू कि इट्स अ एक्चुअल स्पोर्ट व्हिच आई कुड compete इन. सो जस्ट अबाउट 1.5 year ago, मेरा डैड घर पे आया था ऑफिस से, very long tiring day. और फिर every day I used to make sure that I arm wrestle with him. So मैंने मेरा हाथ आगे की arm wrestle करने के लिए and he had coffee in his hand. So the coffee got everywhere and it spilled and it was a mess. So he got a little grumpy and everything. He was like, oh, my coffee, this, that. And then मेरे parents were like, अगर आप arm wrestling में इतने interested हो, तो let's find you a place you can compete and learn arm wrestling. So December 16th, 2023 was my first ever arm wrestling tournament. तो मैंने तभी स्टार्ट किया एंड आई जस्ट kept going. एंड कितना टाइम आपने पहले मतलब आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करी, उसके बाद आप फर्स्ट कंपटीशन में उतरे? मैं बिल्कुल आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग नहीं करती थी. मैं बॉक्सिंग करती हूँ, मैं वही करती थी पहले भी. सो आई नेवर डिड आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग. ओके, सो मतलब फिर क्या था उस फर्स्ट कंपटीशन में? आपका क्या रैंक आया था? लाइक यू प्लेड वेल? Yeah, in my first competition, I got second place, which I was happy with, of course, क्योंकि first tournament, no experience, so I was really happy. कितना टाइम हो गया आपको आर्म रेसलिंग करते हुए? 1.5 years. Only, and you are world silver medalist Yes. in just 1.5 years? Yes. Are you serious? Yeah, that's why. I mean, there's still That's so so cool. much more to do. I mean, both work बाकी है, but I'll get there. Whip up with different hands. You had a super match yesterday, I guess, right? I did, yes. मैं वो लड़की को फेंक के आई. I won 4-0. लड़की को फेंक के कूल 4-0, right? I saw that. आपको मतलब like being 14-year-old. So what is your full schedule, like full day schedule? What do you do in a full day, like school, and how do you manage all that? Yeah, I mean, I sometimes I work out in the morning before I go to school. I train, and then after my school से आ जाती हूँ तभी I just keep training until I go to bed. तो So, बीच में it's just school से पहले workout, school के बाद workout. so you do work out 2 times a day? Yes. If I can't do 2 times a day, then I just do once a day, but for like 4 or 5 hours. And you do it by your own या फिर आपका कोई मतलब स्पेसिफिक कोच है जो आपको दोनों टाइम के लिए वर्कआउट? हाँ, well, अभी मैं संजय सर से कोचिंग ले रही हूँ. अच्छा. So वो मुझे ऑनलाइन कोचिंग देते हैं और हम लोग फेस टाइम भी बात करते हैं, तो वो मेरा फॉर्म करेक्ट कर पाए and he can teach me the correct way to do the workouts and how to grip my opponents. And मैं मेरा फुल बॉडी जो जिम का वर्कआउट है, we have a full gym setup, मैं वो मेरे डैड के साथ करती हूँ. So like bench press, squat, deadlifts and everything. Yeah. So yeah, I have a coach in arm wrestling workouts and my dad takes my gym workouts. तो संजय भैया के साथ आपको कितना टाइम हो गया? I think like 2 weeks. Yeah, recently started. Okay. How's it going? It's going really, really good. मेरा हाथ अभी 24/7, जहाँ पेन पहले नहीं होता था वहाँ हमेशा भी सो ही रहता है. It's always in pain. Yeah, I've heard कि वो बहुत मतलब अच्छा खासा वर्कआउट लिख के देता है आपको. Yeah. Yeah, diet. What is your diet as a school girl? Like, how do you manage that? Well, I love junk food. I love unhealthy food. Like, and I have to control. Ever since I got into arm wrestling, I really learned how to मेरा diet कैसे control करना है. तो मेरा diet का सब ध्यान मेरी mom रखती है. Okay, what do you eat like usually? A lot of protein. I try to avoid sugar. तो मैं like cake, candies, chocolates बहुत कम खाने की कोशिश करती हूँ, especially when I'm cutting. Okay. बट जब भी वेट बन जाता है, मेरा जो गोल वेन पे हो जाता है, फिर तो बस खाना ही रहता है, जैसे अभी चल रहा है. लेकिन फिर वापस कटिंग चालू होता है. सो ड्यूरिंग कटिंग इट्स वेरी लो कैलोरी.
and high protein. Yeah, obvious. What is your weight category? Ideal weight category? 70 kgs, 70. 154 pounds. Yeah. So, like in 70 kgs, have you seen any arm wrestler in India? Like any target? Yeah, मुझे मैच चाहिए आकृति कंडारी के साथ. I think that would be an amazing match. Okay. Yeah, और cool. हम लोग दोस्त भी हैं. हम लोग एशियन चैंपियनशिप्स में मिले थे, एशियन इंटरनेशनल इन 2024. और वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग भी है. मैंने उनकी काफी वीडियोस देखे हैं. Okay. एंड जब ये लॉन्ग टर्म की बात करो, आई मीन सारे लेडीज जो प्रो 15 में, they're incredible, but long term I would love to pull with Nirmal and Yogesh Okay. and even Madhura. Yeah, I yeah, think वो yeah, 65 में खेलती है. yeah, Even yeah. I think वो भी बहुत strong है. So I would love to pull with them and Oh, learn you are from the them. first ever girl I have heard किसी के नाम मतलब मधुरा, निर्मल and योगेश जी. They are too strong, right? क्योंकि इंडिया में उनको अभी तक कोई चैलेंज नहीं करा था. You are the first girl जिसने उनको as a challenge, you know. Who's your favorite player by the way? My favorite player? I mean, I don't think I can pick one, but I mean, I have a lot. Definitely Akriti Kandari, Nirmal, Yogesh, um, Sanjay, like he's the best. Bicep King भी बहुत अच्छा है. Then Oh. Mazahir Saidu, I think उसका last name वैसे है. Kyle Cummings is also a very smart puller. Okay. Dara Singh is also really good. You like all the players in general, like. Yeah, like all the top players, the most famous ones, I watch them all and they're pretty good. Okay. Who do you see as an idol in arm wrestling? I would definitely say Sanjay sir, he's incredible. And even Mazahir Saidu, he's also really good. These two? Yeah. Yeah. You met Devon as well, right? Yeah. You have trained with him. How personally वो कैसे बात करते हैं? No one knows in India that much ना कि Yeah. वो personally मिलते होंगे तो कैसे बात करते होंगे? Like वो आपको training के बारे में बता रहे हैं या फिर like he shows madness on table, right? He's very crazy guy. But in general वो कैसे हैं? No, in real life he's so kind. वो बहुत help करते हैं और उनके techniques are the top. His techniques are amazing. मैं उनके साथ जब भी pull करती हूँ मैं इतना नया सीख के आती हूँ. He's a very kind person in real life. Like on stage he may look rude and everything, but in real life he's very kind. His whole family is really kind. I pulled his daughter Haybri when I newly started arm wrestling, and I beat her. Like मैंने उसकी daughter के साथ arm wrestle किया और मैंने उसको हरा दिया. जब मैं काफी न्यू थी arm wrestling में, I think मैं सिर्फ 2-3 महीने से कर रही थी और मैंने उसको put down कर लिया, जो मेरे लिए बहुत big deal था क्योंकि वो best थी. Exactly. So, obviously. Yeah. So next target is Auden or something? No. Maybe you can. You are too strong at 14. So आगे जाने के बाद क्या पता? What are your thoughts on PPL? Can we see you soon there? Yes, definitely. Pro Punjab League is a dream for me. I mean, for any good arm wrestler, that would be a dream. Exactly. Pro Punjab League में कितने सारे idols हैं, and I feel like वो stage में compete करना, वो stage उनके साथ share करना is a big deal. Broughta Crowdies is my favorite team. अगर मैं कभी वो team से खेल पाऊंगी, it's going to be a dream come true. I love that team. So it's amazing. I'm really looking forward to that day. Okay, so you consider yourself that strong? Okay, कभी भी आप PPL में? Yeah, I would say जब तक next season का बारी आएगा, I'll be ready. Okay, next season तक you are ready. Like if you get a chance for super match, anyone, Nirmal, Yogesh, anyone, who would you pick? अभी अगर हम लोग currently बात करें in the coming one year, I would pick Akriti Kandari. लेकिन आगे मतलब कुछ साल में, maybe like 3-4 years, I would definitely aim for the higher weights like Nirmal and Yogesh. But I know I'm not there just yet. I still have a couple more years. तो अगर हम लोग आज की बात करें, I would pick Akriti Kandari for my opponent. Okay, I really want to see the match between Madhura and Iti. Oh yeah, that would be really good. Yeah, Madhura and Iti. Even I want to see your match. You know, like I saw your matches and I was like, कि Madhura से एक बार होना चाहिए. She's really strong. मैंने उसको Pro Punjab में देखा था. She looked incredible. I think वो undefeated थी Pro Punjab. Yeah, exactly, undefeated. एक भी match नहीं हारी वो. Yeah. She's so strong for her weight. Yeah. Yeah. So, any message for your upcoming opponents like Akriti, Madhura, anyone?
Well, I don't have any like rude messages, but just good luck to you guys for your future. Okay. Um, they all are in आप सब बहुत incredible arm wrestlers ho, and you're a role model for many. So just keep what you're doing, and love you You guys. be like कि मैं कल फेंक के आई हूँ अब मैं तुम्हें फेंकने आ रही हूँ like that No, attitude. that's not something I say. You guys can never guarantee a win, so I don't want to say this now. Yeah, I understand. Like you lost a match in Worlds, only one match, the gold one, right? Yes, yes. So what was your feeling and what was the problem there? I just think कि वो लड़की मेरे से बहुत stronger थी then और मैं definitely correct state of mind में नहीं थी मैं बहुत nervous थी मैं टेबल पे जाके मतलब shake कर रही थी मैं इतना घबराई हुई थी Okay. so I'm happy कि मैं second place भी ला पाई इतना nervous होने के बाद Mm-hmm. but I'm happy with it क्योंकि अभी मुझे पता है किस पे ट्रेन करना है मेरे weaknesses क्या है मेरे strengths क्या है मुझे clear idea मालूम चल गया क्योंकि Okay. कनाडा में ज्यादा लोग मतलब हरा नहीं पाते तो there's not much competition here तो Okay. इसलिए worlds में मुझे पता चला what I should be working on so I started working on all my weaknesses. तो कनाडा में कंपटीशन ही नहीं है या फिर आपने अब आप समझते नहीं हो कंपटीशन किसी को? I would say मतलब शायद एक दो लड़कियां रहेगी जो मेरे टक्कर में रहेगी अभी like in this year but going in the future I don't think Canada में मेरे लिए कोई है competition. Where do you see yourself in 5 years? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म अभी सोचा जाए अभी आपको 1.5 साल हुआ है 1.5 साल इज वेरी लेस टाइम आर्म रेसलिंग में क्योंकि सब लोग बहुत टाइम देने के बाद कॉम्पिटिशन में उतरते हैं एंड आपने बहुत जल्दी सब कुछ कर लिया अचीव भी कर लिया वर्ल्ड में मेडल है आपका सो 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को क्योंकि लोगों का एंड गोल भी होता है कि मैं एक बार वर्ल्ड खेल लूं एंड यू आर लाइक खेल लिया अब तो Well, definitely my starting goal will be to be undefeated at Worlds. और ओके फिर उधर से मैं मेरा way up make करूँगी. So like pro 15 में undefeated होना. फिर in the maybe in later on maybe when I'm 19 20 I hope कि East West 70 kg belt title है मेरे पास. ओके That's the dream for any successful arm wrestler. ओके So that's my long term goal. सो एंड व्हाट्स द एंड गोल फॉर एज एन आर्म रेसलर End goal, yeah, as I said, East vs. West is one part of it, but I also hope to get into coaching arm wrestling. I ओके really want to coach little kids like me when I'm older, Joe, who want to put their 100% in the sport and who want to have a bright future. I would love to coach them and help them. So that's definitely also a dream. Okay, so you are going to be a coach, you are going to be a world champion, a PPL strongest girl, and मतलब अच्छे खासे plans हैं आपके. You are going to kill it. Thank you. Who do you give credit to? My parents. My mom, my dad, my grandparents, my Mm-hmm. extended family, which is in India. So अगर it weren't for them, I don't think मैं आज होती जहाँ मैं हूँ. उन लोग के support के वजह से, उनके help के वजह से, they've always through all मेरा ups and downs, they've always been by my side. हमेशा मुझे push करते हैं. Like जब भी मैं training के mood में नहीं हूँ, मैं बहुत sore हूँ, मुझे cardio नहीं करना क्योंकि I hate cardio. They're there cheering for me, telling me to run faster, telling me to lift heavier weights. So my family gets the full credit for this. Oh, and also my dog. Every Uh, time उनका toy लेके मेरे workout gym के area में बैठेंगे, like a indication of him telling me to come to the gym and work out. So it's okay. all my family. We got a question. Iti, do you feel sometimes you are sacrificing some of your childhood activities? No, no, I don't. Because I feel like अगर मैं childhood में ये सब जो मैं अभी कर रही हूँ ये मेरा childhood है मुझे नहीं चाहिए कि मेरे life में कोई goals नहीं होए so I Okay. think I'm building a future for myself and this is my dream. Okay, so Like आपको मतलब मुझे बड़े होके I don't want to just cook in the kitchen for my husband or something. okay, मुझे future चाहिए मुझे मेरे own goals चाहिए good so man, good man. So आप I love the idea of arm wrestling क्योंकि जब भी कोई बोलता था ना चलो देखते हैं who's the strongest it always needs to come to arm wrestling तो इसीलिए मैं हमेशा arm wrestling से I was in love with that sport तो जब भी मैंने find out किया जब भी मेरे parents ने find out किया कि मैं compete कर सकती हूँ I was like wow और फिर मैंने देखा कि इतने बड़े scale पे सब कुछ होता है तो Mhm. ever since then I gave my 100% to the sport and never looked back. Okay. What are your next plans? Well, मेरा next goal is the North American Championships, जो इधर Canada में हो रहा है in Ottawa, which is the capital of Canada. So Okay. I'll be going there, and that's actually मेरा
first North American Championship, so I'm excited to see वो कैसा turnout होता है. और मैं जूनियर में रहने वाली हूँ, मैं सब जूनियर में नहीं रहूंगी anymore. तो Okay. मैं मोस्ट लाइकली जूनियर 65 भी पुल करूंगी, 70 भी करूंगी, एंड शायद मैं यूथ में भी पुल कर लूँ डिपेंडिंग ऑन हाउ आई फील. Okay. और नॉर्थ अमेरिकन के बाद आई जस्ट गो विद द फ्लो, सी हाउ आई फील. So you got bigger plans now. So at 14 आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो बड़े बड़े आर्म रेसलर्स को, बड़े बड़े एथलीट्स को नहीं मिलती है. So कैसे चलता होगा ये? I mean, it's a different feeling, honestly. जब भी मैं देखती हूँ कि मेरा इतना hard work pay off होता है, I feel even more motivated to, keep doing it, pushing my limits, क्योंकि I see कि वो pay off हो रहा है. So I really want to reach the top level, क्योंकि I know I'm capable of doing it, and I will. Okay. By what age you want to achieve these levels? I mean, I don't think East or West में उन लोग बहुत young लोग को लेते हैं, तो maybe when I'm 18, 20, around that. So I'm eagerly waiting to be 18, right? ताकि मैं और Yeah, बड़े yes. लोगों को खोल कर पाऊँ. यश भाई वर्सेस यू भाई, मैं खुद बता रहा हूँ वो जीत जाएगी. She is too strong. Yeah, sure, I can do that. But मैं करूँगा एक बार आपसे pulling for sure. Just let me know when you come to India. Yeah, मैं actually March में India आ रही हूँ, and I think I'll be practicing with Sanjay sir also. I'll be coming to Delhi. Okay. So, I mean, I would love to pull with all the Indian athletes there. I'm looking forward to For it. sure. Yeah. Pronation PR. Do you check PRs? I don't really do PR, but pronation, I think I can. Honestly, मैं इतना PR count नहीं करती, but pronation PR, I mean, I think I can do at least 60 pounds. Okay, so enough to defeat any of your average arm wrestler. I don't know. अच्छा, if अभी currently आपका मधुरा से मैच होता है on same weight 70, right? Madhura? Yeah, Madhura. Yeah. So what do you think what will happen? Like, I think that's going to be a really, really good match. I think वो match बहुत tough होगा. I don't think उसके लिए easy win रहेगा. I don't think मेरे लिए easy win रहेगा. It's going to be a match जिसमें ready go रहेगा और ऐसे मतलब ऐसा match होगा. It's going to be really hard. But honestly, I don't know कौन जीतेगा. I think it's going to be really tough. okay, so you can't say anything, but for sure आप अच्छा competition उसको दोगे. क्योंकि Yeah. अभी तो ऐसा भी नहीं हो रहा उनके साथ. She is very strong right now. But even Nirmal, Madhura, and one Yogesh, no one has ever faced the challenge क्योंकि उनको अभी तक ऐसे कुछ. निर्मल वर्सेस योगेश इस साल हुआ जो बहुत ही हाइप अप मैच था. I love that match. That was my favorite match. Oh my god. आपने सारे मैचेस देखे थे पीपीएल के? यू फॉलो पीपीएल? Yes. सारे. लेकिन अभी PPL सीजन चालू होता है, मेरे घर पे सिर्फ वो ही चलता है टीवी पे. Nice. Okay, so Iti, it was lovely talking to you, and we'll pull soon, I guess. It was great talking to you. Thank you so much. Okay, thank you so much for joining.